So far we have discussed about electronic configuration, then oxidation state, then we have discussed about contraction in terms of lanthanoid as well as actinoid, then consequences of lanthanide, and then magnetic property. So today we will cover the another important prospect which is correlated with the lanthanol ion, and that is the color property or the spectral property of lanthanol ion. So what we will do, we shall begin with the color first, and then we will discuss that why this particular nature of spectra used to be originated in case of lanthanol. Now see, the first thing is most of the tri-positive lanthanides are colored in nature. Okay, most of them, they do show the color, and the characteristic color of this salt of tri-positive ions persist in aqueous as well as non-aqueous solutions. Okay, the moment I say that these tri-positive lanthanide ions are showing a colored nature, they show this color in aqueous as well as non-aqueous solutions, and they are remaining unaffected by changing the anions or addition of colorless complexing group. Right? The conclusion of this statement is, especially this one is, the color of lanthanide ion is remain unaffected from environmental effect. You see, even if you are changing the anion or the addition of colorless complexing agent, the color is not going to be changed. Okay. Third, the colors are basically the characteristic of cation. It means, you see, if in any complex, if I would say the two prominent entities which are available in coordination sphere, then what you will say, one is a metal, second is a ligand, right? Or you can say one is cation, another is anion. Just now I told you that the color of lanthanide series is going to be remain unaffected by changing the anions or the addition of color complexing agent. It means the color property of lanthanide is not going to be affected by environment. Or another way of concluding this point is the color is basically associated with the cation. Are you getting my point? Now this color is originated due to the incomplete 4f subcell in which there are unpaired electron in different orbitals. Okay, so basically this color are due to incomplete 4f subcell in which there are unpaired electron in different orbitals. If you will compare with the transition element, in that case also we used to say that there is a presence of unpaired electron, that probably the reason behind the color of compound in transition metal. If you will notice, the same reason we are going to hear, but we will discuss in detail little later that many other factors are also being responsible for the color of lanthanol, not only FF transitions. Okay, the next the last is the element with NF electron have a similar color with these 14 minus NF electron. It means if in F orbital one electron is there, and the color of F1 will be same to color of F13. Okay, again I will repeat, if any element is having the electronic configuration F2, then remember even F12 and F2 both will have the same color nature. Okay, let us discuss more. See, this is the table I have shown here. If you will see here, 4F0,
colorless, and here 4F14. So what we are doing, if you will compare with 4Fn and 4F14 minus n, right? Let us consider n is equal to 0. N is equal to 0. So put the 0 in this formula, then what you will get? 4F14. So in both the case, whether the electronic configuration is 4F0 or 4F14, both compounds are showing colorless nature. You see, lanthanum and lutetium both are colorless in nature. Okay. Next, cerium, right? Cerium 4F1 and ytterbium 4F13, both are colorless. Next, praseodymium 4F2 and thalmium 4F12, then neodymium, then erbium, right? Then promethium, and then holmium. See, 4F4, 4F10, 4F13, 4F11, 4F2, 4F12, 4F1, 4F13. So we can say the color of the lanthanum series is correlated with respect to the number of unpaired electrons. And the correlation corresponds that 4Fn and 4F14 minus n electronic configuration used to exhibit the same color. ठीक है? अच्छा, देखिए, I have shown all the compound from 0 to 7, then 14 to 7. देखिए, increasing order है 4F0, 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 6 and 7. ठीक है? And then I have also correlated with respect to descending order where 4F14, 4F13, 4F2. So one thing which has been come from this table is, first of all, if the color sequencing is going to be matched with respect to 4Fn and 4F14 minus n electronic configurations. Secondly, it appears like the color in lanthanum used to be originated due to the presence of unpaired electron in f orbital. See, it appears, I'm telling you, it appears, but it is not always true. We will discuss that what other features are also been associated with respect to the color impart nature of different lanthanums. But as if now, whatever we have gone through, it appears like a presence of unpaired electron in f orbital is responsible for to impart the color of lanthanum series. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, if this is the case, means if the electronic configuration is having a correlation like 4Fn and 4F14 minus n, and they do show the same color, then why in this combination it is going to vary? You see, I have correlate here cerium plus 4. What will be the electronic configuration? Xenon 4F0. In short, F is having 0 electron. है ना? अच्छा, of course it's a tetra positive, but it is tri-positive if you will compare with lanthanum plus 3. It will also have the same electronic configuration, 4F0. Then by default, if the color is going to be originated because of the presence of electron in f orbital, or if the number of electron available in f orbital are same, it means they do show the same type of color, right? भाई अगर कलर की ओरिजिन केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से ही करस्पॉन्ड होती है, so if any two species which are having a same type of unpaired electron or same type of electron, then they do show the similar type of color. But if you notice here, cerium plus 4, what is general electronic configuration? Xenon 4F0, and in case of lanthanum plus 3, again xenon 4F0. But if you will see here, cerium plus 4 is showing orange red color, whereas lanthanum is showing colorless, right? Now samarium plus 2, it is having the electronic configuration 4F16.
right? Similarly, europium plus 3 is also having the electronic configuration 4f6, but if you will compare the color, it is blood red or it is pale pink, right? And europium plus 2 and even gadolinium plus 3, again they do have 4f7. Both they do have 4f7 electronic configurations, but if you will compare their color, you will notice the europium plus 2 is extra yellow and this is colorless. Now again, lutetium and ytterbium 2 plus, yellow and colorless. See, this table is totally oppose what we have concluded from the previous one. It simple means that not only the number of electron available on the f orbitals are responsible for the color origination, there are some other important factors are associated to impart the color. Clear hai na? See, in previous table, it's a very clear that if any metallic system or any element of 4f block is having the electronic configuration 4f n and 4f 14 minus n similarity, then they do show the same type of color. Agreed? What does it include? It corresponds that depending upon the number of electron available in f orbital, the color is going to be originated. Right? If this is the case, that the color is only been associated with the available number of electrons, then any species, forget about tripositive. If you will compare with dipositive and tetravalent, then if it is only the only presence of electron corresponds the color, then I think in this case also they do show the same color. But if you notice, they are having a significant variation. एक कलरलेस है तो दूसरा क्या है, आयरन रेड है. ये ब्लड रेड है तो वो क्या है, पेल पिंक है. ये येलो है तो वो क्या है, कलरलेस है. So drastic change. It means that the only f electrons, या transition of f electron, या presence of number of electron in f orbital is not responsible for the color. अब फिर क्या है वो देखते हैं. The same thing I was saying. There is a divergence in color between tripositive and isoelectronic non-tripositive. See, right hand side, if you will see, lanthanum plus 3, europium plus 3, gadolinium plus 3, and ludium plus 3. In all these four elements, it is in tripositive nature. Whereas if you will compare in the left hand side, cerium plus 4, samarium plus 2, europium plus 2, and ytterbium 2 plus. Right? What you are noticing, even though they are isoelectronic, but they do show the divergence in color. Right? Next, it means that the situation is more complicated. Right? Now, cerium plus 3, gadolinium plus 3, and ytterbium plus 3 all are having unpaired electron, but they are colorless. Now see, I'm making the situation more complicated and more, I want some analytical approach from your end that why it is happening. The moment I have started, I told the presence of electron in f orbital, especially the unpaired electron, the color is going to be important. Then we move ahead and we notice that no, if you will compare with tripositive and non-tripositive ion which are having the same electronic configurations, they are having a diverse range of color. And moreover, even in case of tripositive ion category, cerium plus 3, gadolinium plus 3, ytterbium plus 3, they are not having unpaired electron. If there is no unpaired electron available, then they do show they are having unpaired electron, right? So how come they can be colorless? So it simple means that the situation is more complicated as we expect. Clear hai? Now let us move ahead. Now what is the cause of color? Just now we have raised one point that cerium plus 3, gadolinium plus 3, and ytterbium plus 3 all are having the unpaired electron, but these are colorless. Now why? See, this can be possible that cerium plus 3 and terbium plus 3 provides the absorption band in the higher intensity, especially in UV region. It may be possible. Agreed?
It may be possible that they do show the band in the range of UV. वो तो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज आप किस रेंज को ही ट्रैप कर पाते हैं, विजिबल रीजन को ही कर पाते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि इन दिस केस व्हाटएवर द एब्जॉर्प्शन बैंड appears, it comes in UV region, that's why it appears like a colorless. Now why it is so? If this is the case, then why? Now see, what is the basic electronic configuration? It is 4FN, and if electron is going to be promoted from lower to higher energy level, तो अब सोचिए आप, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? अगर 4FN में है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग example 4F3. Now electron is going to be promoted from F3. F3 is the ground state. Now it is going to be moved to excited state. तो ground state से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ, 4F2. समझ में आ रहा है? और वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में गया होगा, तो किस में गया होगा? सपोज करिए 5D में गया होगा, क्योंकि आपको पता है 4F के बाहर क्या है, 5D है, और 5D के बाहर क्या है, 6S है ना? सो दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी जंप फ्रॉम 4FN टू 5D. अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन F से F ऑर्बिटल में जा रहा था, बट इस केस में इलेक्ट्रॉन किस से किस में जा रहा है, F से D के केस में जा रहा है. हाँ, नाउ सी, F से F में मैं आपको बोल रहा हूं, एक रूल होता है Laporte-Forbidden. There is a one rule that is called Laporte-Forbidden. Means if any transitions takes place within the same orbital, that is not allowed. और आप ऐसा कह सकते हैं कि they do comes in a weak energy level. ठीक है? But here the electron is getting promoted from lower to higher energy level, and here basically if I will ask to you what is delta L in this case, F के केस में कितना होता है, 3 होगा, और इसके केस में कितना होगा, 2 होगा. तो डेल्टा L is equal to ±1, and that is allowed. Remember, that is allowed. Or if you don't want to be get involved in any sort of this, ये Laporte-Forbidden क्या है, allowed क्या है, at least you can understand from this slide that in this case the electron is getting promoted from 4F orbital to 5D orbital. So basically what transitions are going to be happen, F to D में जा रहा है, F से F में नहीं जा रहा है, यानी एक ऑर्बिटल बाहर जा रहा है. तो ऑफ कोर्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब जो भी ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, हायर एनर्जी का होगा. एग्रीड? सो इन दिस केस व्हाट वुड बी हैपन, व्हाटएवर द ट्रांजिशंस आर गोइंग टू बी हैपन, it is going to be happen from F to D rather than F to F. And if I will ask which one will be of more higher energy, what will be your response? Of course F to D will be higher. First of all, it is Laporte allowed, right? And that's why they do come in the range of UV and it appears colorless. चलिए बात कर लेते हैं, अभी और देखते हैं. अब देखिए, और दूसरा एग्जांपल क्या था, सीरियम +3 is having 4F1 and terbium +3 is having 4F8. Remember, now once they are promoting the electron from ground to higher state, think about the ground state again. अगर 4F1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4F के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 0. And I told you half filled, full filled or 0 are the stable configurations. Are you getting my point? And even similarly, if one electrons are going to be released from 4F8, what will the ground state now? 4F7. और 4F7 क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है. तो आप ये मान लो कि बाय नेचर सीरियम एंड टर्बियम भी क्या चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करे. Why? Because the moment that electron is going to be jumped to the higher energy level, they are going to achieve the stable configuration, right? And और वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे जा रहा है, और जैसे ही हाई एनर्जी पे जा रहा है वो यूवी रीजन में कर रहा है और वो कलरलेस हो रहा है. अभी देखिए, दो क्वेश्चन उठते थे इस चीज से कि पहला ये कलरलेस क्यों है, और दूसरा जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन जंप ही क्यों करा रहा है, आराम से बैठा रहे. तो जंप इसलिए करा रहा है क्योंकि उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और कलरलेस क्यों आ रहा है, क्योंकि that electronic transition are of higher energy, and the moment it comes for higher energy, it may come in the, actually it not may, it comes under the UV region, that's why it is colorless. अब देखिए, the same thing I told, the laws of
electron gives the extra stability of an empty or half full cell. I told you just now. Now see, that's why the absorption band are broad सर and नहीं समझा। देखिए मैं ये बोलता हूं, देखिए पहली चीज ये थी कि अगर सारी चीजें केवल इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो होना ये चाहिए कि चाहे मैं ट्राई पॉजिटिव लूं चाहे डाई पॉजिटिव लूं, दोनों में कलर जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है तो सेम आना चाहिए। तो हमने नोटिस किया डिफरेंट है। उससे भी सरप्राइजिंग क्या था कि सीरियम +3, टर्बियम +3 और इनके नेचर, इवन दो दे डू हैव अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, बट फिर भी वो क्या दे रहे हैं, कलरलेस। दिस इज अ सरप्राइजिंग, नो? If everything is associated only with respect to the number of unpaired electron available in the lanthanon, and that is responsible for the color, then in this case, especially in case of cerium and terbium, why they are colorless, even though they do have one electron? In case of cerium, F1, cerium +3, and terbium +3, it is 4f8. So in short, both are having one unpaired electron available. Sorry, one electrons 4f1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 8 है, बराबर। तो होना क्या चाहिए, इनका तो कंपाउंड का कलर होना चाहिए, बट कलरलेस है। अब क्यों कलरलेस आया? इसका रीजन ये है कि देखिए बाकी के केस में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे मैं आपको बोलूं 4f3, तो क्या हो रहा है, F से F के में इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे आपने डी ऑर्बिटल में नहीं पढ़ा था, डी ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड इन T2g एंड EG। तो T2g से इलेक्ट्रॉन किस में जंप हो रहा है, EG में। लेकिन मैं आपसे पूछूं वेदर ऑर्बिटल हैज चेंज, नो, दोनों ही डी ऑर्बिटल ही है। T2g और EG किस में आते हैं, डी ऑर्बिटल में आते हैं ना आते। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप हो रहा है वो सेम ऑर्बिटल में ही जा रहा है ना। बट यहां पर याद रखिएगा, व्हाई दीज 3 एलिमेंट शोज colorless, because in this case the electron is going to be jumped from F to D ऑर्बिटल। एक चीज याद रखिएगा, किस में जा रहा है, F से D ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ के किसी और ऑर्बिटल में जा रहा है। एंड द मोमेंट इट इज गोइंग टू बी जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, देन इट कैन बी एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी, और अगर हायर एनर्जी होगी तो विजिबल रीजन में नहीं आया, इसीलिए वो कलरलेस। अब ये इलेक्ट्रॉन डी में क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये डी में ही क्यों जा रहा है। तो डी में इसलिए जा रहा है, अभी देखिए अगर आप सीरियम +3 का केस ले लीजिए तो क्या है, 4f1। अगर ये डी में चला जाता है तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0। And similarly in case of terbium +3, if you will notice, and the electron is going to be jumped from 4f8 to D, तो बचा क्या, 4f7। 4f7 is a half filled configuration. Similarly 4f1 will be transformed to 4f0. So one is a empty and second is a half filled case, and you know very well they are responsible for the stability of complex. So just to achieve the stability, the electrons are going to be jumped from F to D orbital. Agreed? And see, if you will notice the spectra, I will show you the spectra also, you will notice that these spectra are broader in nature, right, and less altered with the complexing agent. Again, this point is very important. See, in this case, color is not going to be changed with respect to the coordinating ligand or complexing group. I told you in the very beginning only that here the color is not going to be affected by the environmental changes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इनका एब्जॉर्प्शन, अभी तक तो हमने कलर के बारे में बात की कि देखो कलर इस कारण से आता है, कलर ऐसा होता है, कलर वैसा होता है, और ये रीजंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं कलर से। याद रखिएगा, केवल एक रीजन नहीं है कि the presence of unpaired electron in f orbital is responsible for color, नहीं, अभी आपको बताया मैंने कि there are other factors are also being associated. अब देखिए इनका अगर एब्जॉर्प्शन, जैसे हम कलर वलर की तो बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वो कैसा आता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो उसी हो क्या रहा है, if the absorption band arises from the transition within the 4f level, within को आप कंपैरिजन ऐसे करिएगा कि जैसे d ऑर्बिटल में क्या होता था, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल होता था T2g और EG। तो any electron which is going to be jump from T2g to EG,
आप क्या बोलेंगे कि anyhow this electron is going to be moved from d to d orbital. Eg भी d का है, t2g भी d का है. So the electron which is getting promoted from d to g eg, that transition will be called dd transitions. क्या बोल सकते हैं हम? dd transition. और हम ये ऐसा कह सकते हैं कि within d orbital these transitions takes place. अच्छा, similar type of thing remember in case of f, if the electrons are getting transited within the 4f level, that is called ff band. क्या बोलते हैं उसको? ff band. Now see, the f orbitals are deeply buried inside the atom and it is well seated with 5s and 5p. Even d है actually, 5d और 6s भी है. ठीक है, with respect to actinide लगाते रहेगा. चलिए आप देखिए. Now largely shielded from the environmental factor such as the complexing group. This point is very important that it is not getting affected with the crystal field. इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं it is not getting affected with environmental nature. तीसरी लैंग्वेज में बोलते हैं it does not get affected with the coordinating complexing agent or anion. फोर्थ लैंग्वेज में इसी को बोल सकते हैं it does not be get affected by the ligand. All are having the same meaning. क्लियर है ना? डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड. और यहाँ पर कलर इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन, या आपकी लैंग्वेज में इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनोइन. इट डज नॉट गेट अफेक्टेड विद एनी एनायन, लीगेंड और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. क्लियर है? अब देखिए. नाउ crystal field only split the various spectroscopic state J to the small extent. J मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको बोला था, J इज इक्वल टू L प्लस एस टू L माइनस एस. तो ग्राउंड स्टेट का एक J होता है. एक्चुअली अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आई डोंट नो ये J आपको किस सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट एम्फेसिस मच ऑन दिस. बट और उस पर जा नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक अनदर 10 to 15 लेक्चर्स ओवर इट. बट अभी के लिए याद रखेगा कि जैसे d ऑर्बिटल को आप स्प्लिट कराते हैं ना, वैसे f ऑर्बिटल भी स्प्लिट हो सकता है. अभी f ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी फर्दर, जैसे जॉन टेलर आपने पढ़ा वैसे फर्दर स्प्लिट करते हैं, तो उसकी एनर्जी को j के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. बट यहाँ पर वही हर बार वही चीज है कि f ऑर्बिटल डीपली बरीड है. तो होता ये है कि जो भी लीगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा होता है वो f को सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब नहीं कर पाता. जैसे आपने इसमें पढ़ा था ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि एनायन आ रहा है मेटल सेंटर की तरफ, और क्या हो जाता है कि पहले इस पे प्लस रहता है उस पे माइनस रहता है, तो पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर बहुत पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं और डी ऑर्बिटल T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है. उस केस में लीगेंड डी के इतना पास आ पाता है कि वो इसे स्प्लिट कर सके या रिपल्सन फील कर सके. एफ में वो इतने पास आ ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि एफ के बाहर भी ऑर्बिटल है और बड़े बड़े ऑर्बिटल. समझ में आ रहा है मेरी बात? अब जब लीगेंड एफ के पास आ ही नहीं पाता तो एफ को डिस्टर्ब क्या करेगा, है ना? फिर से वही बात कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज नल इज वेरी पुअर इन केस ऑफ लैंथेनाइट बिकॉज ऑफ द सीलिंग. ठीक, अब देखते हैं. नाउ दैट्स व्हाई द एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर यूजुअली शार्प एंड लेस इफेक्टेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड. तो अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में कि FF स्पेक्ट्रा इज ब्रॉडर, शार्प और मिड, मीडिया का नेचर, तो याद रखिएगा शार्प होते हैं ट्रांजिशंस में. उसका रीजन केवल एक है कि इन केस ऑफ लैंथेनॉन और एक्टिनॉइड यू कैन से द F absorption band are usually arises due to the transition within the f orbital, and these f orbitals are deeply buried inside and well shielded by other bigger orbital, and because of that the ligand cannot approach to the f orbital and they don't perturb the nature of f orbital. ठीक है? And that's why the absorption bands are sharp and remain unaffected because of the nature of ligand. Yes, चलिए यहीं तक था ये. अभी मैं इसको आज इतना ही रखूंगा और आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा.
मैं फिर से इसको पूरा रिपीट कर देता हूं। तो देखिए, ये याद रखना है कि द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉन arises from the electronic transition within the 4f level, and that's why it is called as FF band. Since f orbitals are deep inside the atom and are well shielded by the 5s and 5p sublevel, thus they are largely shielded from the environmental factor, and external fields only split the spectroscopic state to a small extent, so that the absorption spectra are unusually sharp, and hence the nature of ligand has a little effect on the absorption spectra of lanthanol. And the line-like absorption band resembles the line emission spectra of more closely than the broad spectra of DD type of transitions. ठीक है? In this case, the transitions are more sharp for a crystalline solid rather than solutions. The sharpening effect can be observed by decreasing the temperature and adding the strongly complexing agent. However, there will be a no change in the general spectra of given by changing the solution to solid or introducing the complexing group.